large presence in the nation not so far from it. Yes, it is Asia's largest economy, China, and it has emerged as one of Bangladesh's अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जोयamani। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग रिएक्शन करने लगे हैं बांग्लादेश के ऊपर। सो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाई चाइना इज इन्वेस्टिंग सो मच इन बांग्लादेश। मतलब चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग कर रहा है और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर। मैंने कहा चाइना के ऊपर कह रहा है। सो व्यूअर्स, आई होप हम लोग बड़ा एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, और स्पेशली इस टाइटल को देख के मुझे भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बड़े मजे की होने वाली है। टाइटल पढ़ने वाली थी पर इन्होंने पढ़ दी, कोई बात। चले, मैंने दोबारा पढ़ दी, आप एक दफा फिर पढ़ लेना। नहीं ठीक है, इट्स ओके, पढ़ लेना एक दफा और पढ़ लेना आप। व्हाई चाइना। तो यार आप लोग समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहती है। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार सब्सक्राइब कर दिया करो, साथ बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर दिया करो, ताकि इस तरह की मजे की वीडियो मिलती रहे आपको। ये देरी नहीं हो गई मेरी, ज्यादा नहीं हो गया मेरे साथ निक्का जी हम देरी हो गई है मेरी। तो पहले वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आज यही बोलेंगे, फिर मैं खामोश। नहीं ठीक है, आप बोले, आप सही लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, पहले वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। As Bangladesh emerges among the fastest growing economies around the developing world, the international presence of other nations is likely to follow it. One of these nations looking at Bangladesh and is increasingly becoming a large presence in the nation not so far from it. Yes, it is Asia's largest economy, China, and it has emerged as one of Bangladesh's key economic partners. According to the Central Bank of Bangladesh, China's investments from 2018 to 2020 amounted to over 1.7 billion US dollars, which makes China Bangladesh's top source of foreign investments. Moreover, China is also one of the largest business and trade partners of Bangladesh. In 2020, its bilateral trade came out at $12 billion, but this figure was easily overtaken by 2021's rapid trade increase. In just the first 9 months of the year, the China-Bangladesh bilateral trade was over $13 billion. Yet despite the large figure that the two nations share, government officials are looking for more. On the other hand, China has also grown its presence in Bangladesh through its infamous international plan called the Belt and Road Initiative. And so far, Bangladesh has received over $10 billion worth of infrastructure investments through this initiative. So how did China emerge as one of Bangladesh's largest economic partners? Before we move on, don't forget to leave us a like and subscribe for more. The modern relations between China and Bangladesh started in 1976, when the two nations established their first diplomatic relations. In the years that follow, the two nations embark on to become a very close relationship. Then President Zaire Rahman and former Chinese leaders would set the stage for the two. By the 1980s, the People's Republic of China would further strengthen its ties with Bangladesh by improving its military, commercial, and cultural ties. Come the 21st century, trade with China reached over $1 billion, and subsequently, China would send over $300 million worth of assistance. In the years that follow, China's presence both in the economy and even in the military would continuously grow. Bangladesh's top companies would be listed on China's stock exchange. Bangladesh has also emerged as a top buyer of Chinese military equipment, and so on. China has indeed established a large presence not just recently, but has been during those years that came before. Among the sectors that it invests in today, China has mostly favored improving Bangladesh's power and energy industry. This is because of the fact that this sector is a key backbone for ensuring economic growth. In fact, the government even indicated that the nation will need around 34,000 megawatts of power by 2030, just to ensure that it can sustain its economic growth of over 7% annually. And thus, the government of China has set out a large power master plan that is setting the nation to be in a prime position for this opportunity. One of these is the Pyra coal-fired power plant, which is a 1,320 megawatt power system and is also the single largest power plant in the nation. Yet this isn't the only large energy endeavor that is taking place. There is a $400 million renewable energy plan that is taking place, and frankly, so much more.
Aside from the energy initiatives, China has also made several plans for the nation's overall digital transformation through the implementation of ICT projects and even setting up industrial and special economic zones, which are often seen as growth engines for developing nations. But in the transportation system, China has also backed a magnificent milestone, which is the Karnapuli River Tunnel, which is expected to become the nation's first ever underwater tunnel. So because of what we are seeing today, we believe that Bangladesh and China's relationship will continue to flourish. But with Bangladesh's neighboring country, India, this may change. India has expanded its bilateral ties with Bangladesh in recent years, and they are looking to expand it further, as India may become Bangladesh's fourth largest trading partner in 2022, way up from what it was in 2020, when it was the ninth largest. With Bangladesh's economy continuing to grow further, this is rather an inevitable happening. International firms want a piece of the growth in any nation, and Bangladesh is no exception. And we believe that Bangladesh is also trying to do its best to lure these international companies in through their special economic zones that have continuously been sought after by Korean, Chinese, and Japanese firms. Due to this international presence, we think that it may have helped the economy of Bangladesh to grow much more. जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा यार। स्पेशली मैं तो बड़ा एक हैरान हूँ उस वीडियो को देखकर। मतलब चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर, तो यार ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी है कि मतलब बांग्लादेश के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मतलब इतना ज़बरदस्त और इतने कम वक्त पे इतनी जल्दी मजीद ग्रो कर सकता है कि जैसे बहुत सारी मतलब कंट्रीज़ ने उसको कुछ भी नहीं समझा था। स्पेशली हर कंट्री बांग्लादेश को, अगर मैं क्रिकेट के हवाले से देखूँ तो बांग्लादेश को ये कहते थे यार इसके साथ अगर मैच होगा ना तो हार ही जाएंगे ये बांग्लादेश को, इनके साथ खेलना एक किस्म का वन साइडेड मैच है। लेकिन अब इतनी ग्रोथनेस हो चुकी है और सिटी पर कि अब अगर कोई मैच खेलता भी है तो वो सोचते हैं कि यार बांग्लादेश नहीं, यार बांग्लादेश के कुछ बॉलर्स और कुछ बैट्समैन जो ऐसे हैं वो टफ टाइम देंगे। और अगर अभी भी देखा जाए तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ सालों में बांग्लादेश एशिया का ना मतलब सेकेंड लार्जेस्ट हब बन जाएगा, टेक्सटाइल का भी और देखा जाए तो एक इकोनॉमी का भी, और इनकी जीडीपी तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली ढाका की। तो यार बांग्लादेश वाकई बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। सही बात है, ग्रीन एरिया, हर जगह ग्रीन एरिया देखा है जी। जैसे उसकी क्या कहते हैं चितीगोंग सिटी हमने देखा था, ढाका सिटी पे हमने किया था, फेनी सिटी पे हमने रिएक्शन किया था, तो उस सिटी पे यही ऐसा लग रहा था कि यार वाकई कुछ इंजॉयमेंट है वहाँ पे। और स्पेशली यार कॉक्स बाजार जो हमने देखा था यार, उस पर बड़ा मजा आया था जोया, है ना? सही, बहुत मजा आया था। इंशाल्लाह जरूर विजिट करेंगे बांग्लादेश। सो आई होप व्यूअर्स आपको भी बहुत ही मजा आया होगा, और वीडियो पर अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक करें, और हाँ कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, जितना प्यार जितनी मोहब्बत दे चाहते हैं दिल खोल कर दे दें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है। और साथ इन्होंने कहा था मैं बोलूंगी, नहीं मैं तो नहीं बोलूंगी, अब मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह।